वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम नॉलेज बूस्टर। जो पिलाने ए फर्स्ट सेमिस्टर को आसने तो ये बहुत कन्फ्यूज थे कि कौन पढ़ो कौन नाई कौटा लंग क्वेश्चन आसो कौटा सर्ट नोट आसो सब भाव पिलांर मुंड खराब हो जाता। तो मुझे नहीं आसी कि सिलेक्टेड इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन और सिलेक्टेड इंपोर्टेंट सर्ट नोट मुझे सबूक लंग क्वेश्चन और सर्ट नोट डाकिदेवी आपड़ ताको बिट बाय बिट लिखि रखु। आउ जो मैंने भी कोर वन सिलेक्शन क्वेश्चन वीडियो देखी ना मु तले डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दीजिए से माने लिंक को जाई वीडियो देखि परिवे। बॉटनी ऑनर्स कोर वन रे जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छे ताको मो वीडियो रे दे दीजिए से बास आपण पढ़ु आराम से आपण एग्जाम रे 80% कन्फर्म से गारंटी मु दूची। किंतु आपण पढ़े और लेखा प्रैक्टिस करें एमती नहीं कि आपण थरे पढ़ीदे बास हो गला जिते पारे से लिखे ताद्वारा एग्जाम रे हाथ फ्लुएंसी हम आ जो 3 घंटा आपण मानक टाइम मिलूँ से टाइम भितर आपण ताको भलसे लिखिपारे कौन। तो चलते आज स्टार्ट करवा कोर टू। मुझे नहीं आसी कोर टू रोटे वीडियो कोर टू रे कौन कौन सब सिलेक्शन लंग क्वेश्चन अच्छे कौन कौन सिलेक्शन शॉर्ट नोट अच्छे मुझे समस्त को सबूक डाकबी आपण समस्ते खाता पेन सांगे धरिकी बसतु मो बिट बाय बिट डाकबी आपण खाता पेन रे लिखि रखु। तो चलते स्टार्ट करवा आज फर्स्ट लंग क्वेश्चन। तो हेडिंग दिंतु इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन कोर टू पेपर कौन आपणकर अच्छी बायोमोलेक्यूल्स और सेल बायोलॉजी यहाँ बहुत वेरी 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 इंपोर्टेंट टॉपिक कहीं पेपरटा आपणकर जितेबाला आप प्लस 3 सारे जितेबाला पीजी करेंगे पीजी लेवल रे ए टॉपिक रू ही आप पढ़े। तो मु कहबार कथा कौन जे कि ए टॉपिक को आपण एबेठू मन ध्यान देकी पढ़ंतु ताकि आपण जिते पीजी लेवल रे पढ़िबे ताको आपण को बेसी किछि कष्ट करने को पड़ेबनी। तो मु स्क्रीन रे आपण को सिलेबस दे दीची आउ जहाँ पाखे हार्ड कॉपी अच्छे से मैंने हार्ड कॉपी धरी बसतु जहाँ पाखे ना मु स्क्रीन रे सिलेबस देची सिलेबस देखंतु। मु बार बार कहूँ जहाँ पाखे सिलेबस ना सिलेबस हार्ड कॉपी बाहर करंतु कहीं आपण 6टा जाक सेमेस्टर आपण को सिलेबसटा निहाती निहाती जरूरी। तो डेरी नक चलते वीडियो स्टार्ट करवा मुझे गोटे गोटे लंग क्वेश्चन डाकुचे ताको लिखि रखु। फर्स्ट लंग क्वेश्चन व्हाट आर केमिकल बॉन्ड What are chemical bond? Describe various type of chemical bond with its significance. What are chemical bond? Describe various type of chemical bond with its significance. Next, what are the structure? What are the structure and property of water? Third, very very important long question, what are carbohydrates? What are carbohydrate? से कंटिन्यू करंतु describe about structure, function, classification and property of carbohydrate. What are carbohydrate? Describe about structure, function, classification and property of carbohydrate. Next question, what are enzymes? What are enzymes? Give a brief account of structure, property and classification of enzyme. पुणी रिपीट कर दूँ मु व्हाट आर एंजाइम्स गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट, व्हाट इज एंजाइम इनिबिशन? व्हाट इज एंजाइम इनिबिशन? राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इनिबिशन with factor affecting enzyme inhibition. Write down different types of enzyme inhibitions with factors affecting enzyme inhibition. Next, what is lipid?
What are the various classes of storage? What are the various classes of storage and structure of lipid? Next, what are fatty acids? What are fatty acids and give their structural and function? What are fatty acids? Give their structure and function. Next, what are tag? Tag बने ब्रैकेट लिखंतु ट्राई एसाइल ग्लिसेरॉल्स ताको आम टैग कौच से एग्जाम रे पचारि पारे व्हाट आर ट्राई एसाइल ग्लिसेरॉल बा व्हाट आर टैग. ओके. नेक्स्ट, what is protein? Give the detailed structure and classification of proteins and amino acid. पुणी रिपीट करुची मो. What is protein? Give the detailed structure and classification of proteins and amino acid. Next, what are nucleic acid? Give the structure of various nitrogenous base and describe the structure and function of nucleotide. What are nucleic acid? Give the structure of various nitrogenous base and describe the structure and function of nucleotide. Next, what are RNA? What are RNA? What are the different type of RNA and describe them with the structure. What are RNA? What are the different type of RNA and describe them with the structure. Next, define cell. Define cell. Difference between prokaryotic, eukaryotic cell and what is endosymbiotic theory regarding to eukaryotic cell. Explain. ये सब गोटे क्वेश्चन और एटा मोस्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. पुणी रिपीट करुचे. डिफाइन सेल. Difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell and what is endosymbiotic theory regarding to eukaryotic cell. Explain. Next, what is nucleus? Give the detailed structure of nucleus with diagram with function. What is nucleus? Give the detailed structure of nucleus with diagram and function. Next, most important long question. What do you mean by membrane transport? What do you mean by membrane transport? Discuss various type of membrane transport system in plant. Discuss various type of membrane transport system in plant. Next, describe the structural, organization, functional and semi-autonomous structure of mitochondria and chloroplast. Describe the structural organization, function and semi-autonomous nature of mitochondria and chloroplast. एक माइट्रोकंडिया क्लोरोप्लास्ट मिसेकी गोटे क्वेश्चन आसी पारे ना अदरवाइज पचारियो माइट्रोकंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन पचारि पारे अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट पचारि पारे. तो आप माइट्रोकंडिया पे अलग प्रिपेयर होंतु क्लोरोप्लास्ट पे अलग प्रिपेयर होंतु. Next, most important long question. Define cell cycle. Define
cell cycle and what are the phases of cell cycle? What are the phases of cell cycle? ये सरला आमर सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एबे मु आपनको सिलेक्टेड शॉर्ट नोट कहबी जमी लॉन्ग क्वेश्चन डाकिली सेमती शॉर्ट नोट भी डाकिबी किंतु शॉर्ट नोट टिके अधिक होइपारे तो आपण सबुजाक शॉर्ट नोट टिके ध्यान देकी लिखिबे विरक्ति हेबेनी कहीं एबे जदि विरक्त हेबे ताहले आपण एग्जाम रे किछि भी लिखि परिबे नाही मु जति शॉर्ट नोट डाकिबी सेति आपनको 1.5 रे आसी पारे कि 3 मार्क रे भी आसी पारे शॉर्ट नोट को सब बेले 3 मार्क हिसाब से प्रिपेयर हे कहीं ना जदि आप 3 मार्क हिसाब से पढ़ुं 3 मार्क हिसाब से कले कि आप 6टा पॉइंट पढ़े 6टा पॉइंट जदि डायग्राम थी ताल आप तार डायग्राम भी करेंगे एग्जांपल धरतु माइट्रोकंडिया जदि आप शॉर्ट नोट 3 मार्क रे पचारे आप माइट्रोकंडिया कौन ता विषय पूरा डिस्क्राइब करेंगे 6टा पॉइंट लिखे विथ तार डायग्राम करेंगे तले फिगर रे लिखे से कौन जो डायग्राम आप कर तले मेंशन करेंगे कि आप कहार डायग्राम कर डायग्राम भितर कौन कौन अच्छी से गोटे 2टा लेवलिंग करेंगे ओके तो सब बेले आप 3 मार्क शॉर्ट नोट को 3 मार्क हिसाब से पढ़ंतु आपण को जी भी शॉर्ट नोट डाकिबी से आप जमार विरक्त न हो कि नोट लिखंतु जदि आप एबे न पढ़ेबे ताले एग्जाम रे आप बहुत हैरान हेबे आ मन रखंतु भूल रे भी बेक लगेबेनी बेक लागिला माने आपण सर्टिफिकेट रे डेस्टिनेशन कटि जबो आ डेस्टिनेशन जदि कटि गला ताले आपण +3 पढ़ी फायदा कोन तो मु जति क्वेश्चन करूची सेतिकी लिखि रखंतु सेतिकी भितर ही क्वेश्चन आसीबो सेतिकी ही आपण प्रैक्टिस करि जानतु एग्जाम रे यार भितर ही क्वेश्चन आसीबो तो आ डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करिवा आजिरो इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट ता आगर पिला माने जदि आपनको आम वीडियो भल लागुची प्लीज गोटे लाइक करंतु और कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि जणंतु कि आम वीडियो आपनको केमिति लागुची आपण मानको संग किंबा सान भौणी बड़ भौणी जे भी अछंती तांको शेयर करंतु तो चलंतु स्टार्ट करिवा आजिरो इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट फर्स्ट लिखंतु टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड नेक्स्ट significance of chemical bond next difference between endogenic exogenic reaction next laws of thermodynamics next what is pH next what is coupled and redox reaction माने कौन है व्हाट इज कपल्ड रिएक्शन आसीपारे अदरवाइज व्हाट इज रिडक्स रिएक्शन भी आसीपारे ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम नेक्स्ट होलो एंजाइम नेक्स्ट व्हाट इज कोफैक्टर नेक्स्ट व्हाट आर प्रोस्थेटिक ग्रुप विथ एग्जांपल What are prosthetic group with example? Next, substrate specificity. Next, activation energy. Next, lock and key theory. Next, what is carbohydrate? Next, protein. Next, enzyme next amino acid next lipid next factor affecting enzyme activity next monosaccharide with example next disaccharide with example next oligosaccharide next function of fatty acid next essential fatty acid next tag मैंने मुझे कौन कहती ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स ओके नेक्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नेक्स्ट protein denaturation and renaturation next nucleotide next types of DNA
Next, what is mRNA? Next, why DNA is genetic material? पुणी रिपीट करुची, why DNA is genetic material? Next, define cell. Next, difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Next, chemical composition of plant cell. Next, function of plasma membrane. Next, fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Next, difference between active membrane transport and passive membrane transport. Difference between active membrane transport and passive membrane transport. Next, microfilament. Next, endoplasmic reticulum. Next, induced fit theory. Okay, तो ये आमर कंप्लीट है सिलेक्टेड शॉर्ट नोट। आई होप समस्ते भल लिखि पारे और जो मैंने भी वीडियो को जहाँ जहाँ नोट डाकिली से मैंने लिखि पार नथिबे तो प्लीज़ वीडियो को बैक करी पॉज करी लिखंतु। आम वीडियो आपन को केमी लगिला प्लीज़ कमेंट रे कमेंट करी जणांतु, लाइक करंतु, अधिक अधिक शेयर करंतु ताकि आपण सांग कि भाई भौणी मानंकु हेल्प हबो। ओके, आउ गोटे छोटे सब्सक्राइब भी करदेवे। ओके, तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।